Hello friends, a very good afternoon to everyone. Welcome to MALUKA. Yes. Today we will be discussing a very important questions of history optional that is there. The question is basically regarding the monetary policy or the coinage system that was there during the time of the Mughals. In case or during the time of the medieval India. What was the monetary policy during the time of medieval India? दिल्ली सल्तनत के टाइम के ऊपर इनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी? मुगल्स के टाइम के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी? इन दोनों के बीच में शेरशाह सूरी ने व्हाट वर द कॉइन्स दैट वर इशूड? यू नीड टू नो अबाउट व्हाट वर द कॉइनेज और द कॉइन्स दैट वर देयर. नॉर्मली दिस इज वन क्वेश्चन जो आपको एक जगह पे इसका मटेरियल नहीं मिलता. इन द स्टूडेंट दे फेस अ प्रॉब्लम. This is one question that I would be taking up that is basically concerned regarding the monetary policy. इसके छोड़ के दो और क्वेश्चन करवाएंगे जहां से टॉपिक का बन सकता है. This is one question that was there. The second question will be coins during the time of ancient India. And third, what is the importance of these? ये तीन क्वेश्चन we will be basically doing, Shrikal, in the context of regarding the coinage system, regarding the monetary policy, how this coin system comparatively helps in the recovery of, for example, under better understanding of the political system, economic system, cultural system, religious system, trade and craft, the knowledge about the metals that were there at that point of time, the, for example, inscribing of the kings and other things that are there on the coins. ये सबको समझने के लिए कैसे coins हमारा ये useful रहता है. All these things you need to understand basically जब importance के करेंगे. एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है मेडिवल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा है एंशिएंट के कंटेक्स्ट में आपकी क्या मॉनेटरी पॉलिसी है. कॉइन्स ऑफ गुप्ता या गुप्ता के बाद का ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी देयर. So we would be discussing at the part of the history optional that what is basically the coinage system during the time of the medieval period. The question जो इसके ऊपर हमने बनाया है, the coinage was important part of the medieval history of India. जो coins आए थे, the coin age थी, that forms are basically an important part of the medieval history of India in understanding various things. This is basically a question जिसके ऊपर हम अभी वाला topic discuss करेंगे. You can start off with this the question. आप यहाँ से directly start कर सकते हैं. In the regard that there was the establishment of the Turko, Afghan and the Mughal rule that take up. एक simple सी बात है. जब for example अभी हम GST को implement कर रहे हैं, क्यों है? Because we do not want to have multiple taxes in that regard, because India is one defined territory that has been there. तो यहाँ पे अगर अलग अलग रूलर्स होंगे तो अलग अलग रूलर्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं. कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. देयर में बी डिफरेंस ऑफ प्योरिटी, दैट में बी प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या होता है, इफ देयर वुड बी अ सिंगल टेरिटोरियल, अ बिग टेरिटोरियल एम्पायर दैट वुड बी सेट अप, दैट वुड बी कंपैरेटिवली यूजफुल इन कैरिंग ऑन द ट्रेड विदाउट मच रिस्ट्रिक्शन. और अगर बड़ा एम्पायर होगा तो राजा भी काफी सिक्के इशू करेगा. In that regard, the setting up of the big empire gave a boost to the monetary system that was there, because the rulers, they issued a good number of the coins for meeting the needs of the state and for market transaction also. जितना बड़ा एम्पायर है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है, उतना ही ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस करोगे. जितना छोटा है उतना कम होगा. If there would be a huge empire that would be set up, that will definitely be giving a boost to the economy, and the state will also be needing. हो सकता है आप सैलरी क्वाइंट्स में या किसी भी कंटेक्स्ट में पे करते हो, जरूरी नहीं कि लैंड रेवेन्यू पे करोगे. जब किंग स्ट्रांग होगा, सैलरी वुड बी पेड इन कैश, तो वहां पे आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी. A very good afternoon to everyone. In that regard, it becomes important that when a big empire would be set up, for example Turko-Afghan, for example Mughal empire is being set up, that will be giving a boost. और राजा खुद coins issue करेगा स्टेट के लिए, और for example for the market transaction. These coins were made of different metals and in different standards were also being followed. Now the coins that were during the Delhi Sultanate period also, the first king who issued these coins at that particular point of time was Iltutmish. It was he who paid a good amount of attention to the coinage system, the task of coinage that was there. He was the first king at that point of time in Delhi to issue an Arabic coin. वहां पे लिखा हुआ, and coins were Jital and Tanka. These were the coins that were issued by him at that point of time.
And therefore it was these that they laid the basis for the monetary system that was there in the medieval period. Medieval period के टाइम पे जो monetary system सेटअप किया गया था, इससे पहले जब हम एंशिएंट का करेंगे तो गौरी के टाइम के कॉइन्स का भी थोड़ा बहुत एक पास बाय रेफरेंस करेंगे तो कंटिन्यूटी से बन जाएगा. 3 क्वेश्चन दैट विल बी सफिशिएंट, अगर यहां से आना हुआ तो कुछ भी. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था दैट वाज बेसिकली बाय मोहम्मद बिन तुगलक. इट वाज ही हु कैरिड आउट द मेजर चेंजेस इन द करेंसी दैट वाज देयर, and in the context that he issued what is called a token currency. For example, जैसे हमारा फेस वैल्यू है, the face value of these coins were far more than the metallic worth. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा अगर 500 रुपए का या 2000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल एक पेज का नोट है जो हम मान लेते हैं, उसकी 2000 इंट्रिंसिक वर्थ तो नहीं होता ना. या फॉर एग्जाम्पल कोई 100 रुपए का क्वाइन अगर इशू होता है तो उसका 100 रुपए बनाने या मेटल की कीमत तो नहीं होती. तो इसी चीज को इसने करने की कोशिश करी थी. व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, ही वाज सेइंग दैट लेट्स हैव, इस चीज को हम मान लेते हैं ये फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का है, इस चीज को मान लेते हैं कितने का है. इंस्टेड ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर क्वाइन, गोल्ड क्वाइंस को और सिल्वर की क्वाइन की जगह पे कॉपर एंड लेड के क्वाइंस इश्यू करने शुरू कर दिए थे. और बोला गया था कि इसको आप इक्वल, जिस तरीके से गोल्ड क्वाइन की वैल्यू है उसी तरीके से इसकी भी फेस वैल्यू लेके चलो. द फेस वैल्यू इन दैट कंपैरेटिवली मच मोर एज कंपेयर टू द मेटालिक वर्थ दैट दीज वर हैविंग इन दैट रिगार्ड. But on the other hand, the system also failed because the currency was easy to replicate. बहुत लोगों ने आपने, हाँ बिल्कुल सही बयान, बहुत लोगों ने अपने घरों में ही मिंट खोल दी, अपने घर पे कॉइन बनाने लग गए थे. सिस्टम फेल. अब सिस्टम क्या होने लगा था, आपने गोल्ड और सिल्वर की जगह पे कॉपर और फॉर एग्जांपल लेड के कॉइन बनाने लग गए थे, या कैसे भी कॉइन्स बनने लग गए थे. लोग खुद ही बनाने लग गए और बाद में एक्सचेंज करे ऐसे कंटेक्स्ट में. चलो ठीक है जी, आप हमें इसकी जगह पे ये गोल्ड कॉइन्स दे दो. सिस्टम वाज फेल्ड. Not only that it was being easy to be replicated, but another problem was that the state did not maintain what is called a monopoly over this coinage system. That's why the problem was there. He failed. मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नॉर्मली आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो ऐसी किताबों में देखने को नहीं मिलता. He also issued these new coin that was known as Sultani. Then Firoz Shah Tughlaq issued a coin Ada, that is half of Jital, and Bik, that is 1/4 of Jital. These were the another coins that was issued by Firoz Shah Tughlaq. Along with a coin that was issued by Firoz Shah Tughlaq was Shasgani coin, that is what equal to 6 Jital that was there. Different coins were issued at different intervals of time. Behlol Lodi also issued a new coin known as Behloli. बहलोल लोदी ने बहलोली कॉइन इशू किया था. The nature of these system, the coins, कोई ये कॉइन इशू कर रहा है, कोई ये कॉइन इशू कर रहा है, therefore that varied from a sultan to sultan. जैसे डायनेस्टी चेंज होती गई, सुल्तान अपनी मर्जी से जब एक सेम डायनेस्टी में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किया, फिरोज शाह तुगलक ने नए कॉइन्स इशू करने शुरू कर दिए. Why this was happening? Because there was no uniform standard of the coinage code that was there that developed during the Sultanate period. क्योंकि uniform standard ही setup नहीं किया गया था, and therefore in that case multiple different coins that was started at that point of time during the Sultanate period. उसके बाद शेरशाह सूरी आए. It was he who carried out a good amount of, he laid the foundation of tri-metallic currency. Tri-metallic, for example, gold, silver, copper, the different coins were there. It was his coins that in history of monetary system, Shersha Suri, he enjoyed a great significance. चाहे इसका खुद का टाइम पीरियड 5 साल का ही था, but he laid the foundation of what is called a tri-metallic currency system that was there. The gold coins of his period was known as mahar. Silver coin को रुपया बोलते थे, and the copper coin was known as dam. This is what is basically the coins that were there. And the most important thing that is there is a high standard, because therefore uniform weights that were followed at that point of time, and the quality of standard was also maintained. यूनिफॉर्म वेट रहेगा, चाहे लक कॉइन है, चाहे मोहर है गोल्ड की, चाहे सिल्वर का फॉर एग्जांपल रुपया है, चाहे कॉपर का दाम है, but most important thing was the weights were comparatively uniform and the standard of quality was being maintained at that point of time. इसी वजह से क्या हुआ था, the system that was started by him was even continued
later on by the Mughals also, to such an extent कि जो रुपया था that even continued till the Britishers that were there 1835 तक रुपया वो circulation में रहा. Great developments were being made. Then Mughals आए तो monetary system. When the Mughals were there, they had a lasting political entity. They continued to rule the Indian subcontinent, for example, for more than 150 years. 150 साल तक कोई रूल करता है तो definitely it is bound that you will be developing a certain amount of coinage system that would be there. They paid a very special attention to the coins that were there. Monetary policy, because it was basically instrument of forcing the sovereignty of the crown. जिस तरीके से मोनोपोली मेंटेन करी थी कि अगर क्वाइनेज बनाना है तो हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जो मुगल्स they were trying to impose and they successfully did impose their sovereignty over the others. It was one of the way कि अगर हमें छोड़ के कोई और कॉइन मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे. And they banned even the Britishers. Then Britishers were not allowed, for example, by औरंगजेब. जब ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी थी बॉम्बे की सरकार ने अपने कॉइन्स इशू करने के लिए, औरंगजेब ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम किया तो देख लेना. Why? The most important thing that was followed was there was a complete monopoly of the state that was being maintained. Essential feature at that point of time, and that was considered as a royal prerogative that it would be only they who would be manufacturing the coin, and no one was allowed to perform this function. In that regard, Akbar issued a number of coins. The coins were gold, silver, and copper. Copper was issued. Shahanshah was the biggest gold coin that was issued at that point of time. The coins of silver, they were rupiah and jalali. They were different coins of silver. Copper के context में it was dam, that was a copper coin that was issued by Akbar at that point of time. Not only this, but a very important thing is that there was another coin by the name Mohar that was used by Akbar, पर किसके लिए? गिफ्ट देने के लिए, डोनेशन देने के लिए, या होर्डिंग पर्पसेस के लिए, not for any other thing. One important feature of the Mohar was that जैसे कॉइन के दो सिक्के हैं, एक साइड पे इमेज थी राम और सीता की. क्वाइन अकबर के हैं, राजा मुगल रूलर है, लेकिन क्वाइन के ऊपर वो फोटो किसकी है? राम और सीता की. नॉट ओनली राम और सीता की फोटो है, बट इसमें दूसरी इसकी ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा गया है? द वर्ड रामराज हैज बीन मेंशन्ड इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहता बाहर से आए थे, वो नहीं मानते थे, ये मानते थे. राम सीता की क्वाइंस में फोटो है, वर्ड रामराज वहां पे लिखा हुआ है. इन दैट रिगार्ड, नॉट ओनली दिस, जहांगीर इशूड 2 coins, Nur Afsan and Khair Kabul, that is there. Shah Jahan issued gold coins in his name Khurram. Aurangzeb stopped the practice of inscribing kalima. जो कलमा जो इस्लाम से लिखा जाता है उसको रोकना किया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई कॉइन्स दे वुड बी फॉलिंग डाउन और किसी लोगों के पैरों के नीचे आ सकते हैं, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, एंड दैट वुड बी बेसिकली बीइंग डेरोगेटरी टू इस्लाम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ड्यूरिंग द रेन, जैसे आपको बता रहे थे, औरंगजेब के टाइम के ऊपर क्या हुआ था? द बॉम्बे गवर्नमेंट इशूड द कॉइन्स विद द नेम ऑफ इंग्लिश क्राउन. औरंगजेब ने तभी ऑर्डर इशू किया कि इसको बंद कर दिया जाए, बिकॉज दैट वाज सीन द डायरेक्ट चैलेंज टू द मुगल सॉवरेंटी, बिकॉज दे वांटेड टू मेंटेन द मोनोपोली ऑफ दीज. One very beautiful thing about the Mughal coin was that the Mughal coinage system was open to all. आप कोई भी मेटल ले जाओ और बोलो कि इस मेटल के कॉइन बना दो, वो कॉइन बना के दे देंगे, एंड देयर वुड बी चार्जिंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट वाज बीइंग मेड. आप अपना मेटल ले जाओ, फॉर एग्जांपल गोल्ड ले जाओ, बोलो कि इससे हमें कॉइन बना के दे दो, गुड आफ्टरनून, तो आपको कॉइन बना के दे देंगे, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली अ स्मॉल फी. इससे क्या हुआ कि मॉनेटरी सिस्टम जब क्वाइनेज कंपैरेटिवली और ज्यादा डेवलप होने लगे, द सर्कुलेशन वाज देयर, एंड जो ट्राई मेटालिक कॉइन ऑलरेडी चल रहे थे इन सर्कुलेशन, दैट कंपैरेटिवली बिकेम मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट. The Mughals, they could do it for the simple reason that a high level of standardization was important, that was maintained, and they maintained a uniform metallic standard that was followed throughout the Mughal Empire. The quality, that standard level of quality standard was also maintained in the context that there were inbuilt checks and balances that were maintained. कि जो भी कहीं पे मुगल मिंट है वहां पे इनबिल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस हो गए, एंड देयर वाज आल्सो एन क्वालिटी इंस्पेक्टर दैट वाज देयर, कि ऐसा ना हो जाए कहीं मुगल्स की कॉइन्स की क्वालिटी कम रह जाए, एंड देयरफॉर अ क्वालिटी इंस्पेक्टर वाज बेसिकली अपॉइंटेड इन ऑलमोस्ट एवरी मिंट दैट वाज देयर. The Mughal coins were accepted. It was accepted, for example, by the people, by the state agencies and the private agencies also.
not only in India but also in Kabul, Kandahar, to Dhaka in the east, to Vijaypur, to Golconda in the southern region also. It was so important. क्यों? Because standard काफी ज़्यादा maintain किया जाता है. क्यों? Because it was highly standard was there, quality was being maintained. आपको gold में gold की worth दिख रही है, आप उसको करोगे. Another important thing, जब आप इतना चीज manufacture करोगे, is also a need for the import of the metal that was for a very important feature. Different metals, for example, gold हो गया, silver हो गया, copper हो गया, they were imported, and in that regard, it is the balance of positive balance of payment that was going on at that point of time. End में आप लिख सकते हो short. The history of the coins played an important role in the reconstruction of history and the kings of that particular period. And the coin age during the Mughals was very much fundamental in the reconstruction and understanding the economy of that particular period, of that particular point of time. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो. Monetary policy of India. And to tomorrow's class, I would be taking up another question that would be there. The sole objective is to help the students to solve those questions with a comparative good amount of conceptual clarity and development in the regard कि आपको किसी ना किसी तरीके से help करी जा सके. Thank you very much.